जय श्री महाकाल। प्रिय मित्रों, मैं हूं पंडित लक्ष्मणाचार्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं प्रिय मित्रों, हम देते हैं आपको यहां पर वेद पुराणों से जुड़ी रोचक ज्ञानवर्धक जानकारियां और उनका अध्ययन भी कराते हैं। प्रिय मित्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं रुद्राष्ट अध्याय का और सप्तम अध्याय तक हम अध्ययन कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अष्टम अध्याय का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। समस्त अध्यायों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप संपूर्ण अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अष्टम अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयातिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वारश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ध्यान से देखेंगे। हरि ओम। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वारश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओजश्च मे सहश्च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थेनि च मे परुगुंखि च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ध्यान से देखेंगे। ओजश्च मे सहश्च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थेनि च मे परुगुंखि च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ज्येष्ठ्यञ्च आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वरखिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ज्येष्ठ्यञ्च
आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वरखिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जानख्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जानख्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सञ्च मे मायश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे जसश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सञ्च मे मायश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे
जासश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा ऊर्च मे सुनिरिता च मे पायश्च मे रासश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे क्रेखिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुश्च मे प्रभुश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवञ्च मे छित्तञ्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुश्च मे प्रभुश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवञ्च मे छित्तञ्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भाविख्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथ्यञ्च म ऋद्धञ्च म ऋद्धिश्च मे किलृप्तञ्च मे किलृप्तिश्च मे मातिश्च मे सुमातिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भाविख्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथ्यञ्च म ऋद्धञ्च म ऋद्धिश्च मे किलृप्तञ्च मे किलृप्तिश्च मे मातिश्च मे सुमातिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वानस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे सीसञ्च मे त्रपूच मे यज्ञेन कल्पन्तां मा अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वानस्पतयश्च मे
हिरण्यञ्च मे जश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे सीसञ्च मे त्रपुच मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओखदायश्च मे कृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओखधायश्च मे कृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। प्रिय मित्रों, यहीं तक रहने देते हैं। आने वाले वीडियो में हम आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।